दोस्तों, आज हम लोग सारनाथ में हैं और सारनाथ में सारनाथ बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री के जस्ट बगल में ही और पास में ही आप कह सकते हैं हमने UPSTDC का राही होटल बुक किया है ना। और ये इसका एंट्रेंस है और यहाँ पे पार्किंग एम्पल पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे गवर्नमेंट का है, ये टूरिस्ट बंगलो सारनाथ राही का है। UPSTDC गार्डन वगैरह भी है ना। नॉर्मल सा है लेकिन स्पेसियस है। इतने बिजी एरिया में इतना स्पेसियस होटल मिलना थोड़ा बड़ी बात है। तो ये है टूरिस्ट बंगला सारनाथ, है ना। पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है। UPSTDC के ऐप से या साइट से आप बुक कर सकते हैं इसको। हमने 4 बेड वाला रूम बुक किया है, ठीक है। ट्वेंटी 4/7 रिसेप्शन। आप अपना नाम भी बता दीजिए सर। मदन कुमार जी बहुत हेल्पफुल हैं। नरेंद्र यादव जी हमारी बहुत हेल्प किए हैं ऑटो के लिए, थैंक यू। तो ये हमारा होटल है। यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है। रेस्टोरेंट 10:30 तक खुला होता है। किचन है, साफ़ सुथरा है ना। बहुत बड़ा हॉल है। देखिए, गवर्नमेंट का है तो आप उससे माइंडसेट से आइए। चीज़ें लेड बैक है, बट गवर्नमेंट के हिसाब से मुझे तो अच्छा लगा। ये मैं रेस्टोरेंट साइड से निकल रहा हूँ। पीछे ये सारे रूम्स हैं, आप देख सकते हैं, सारे रूम्स हैं। ओनली ग्राउंड फ्लोर है इसमें, ज़्यादा फ्लोर्स नहीं है। और एयर कंडीशन रूम है, ठीक है। हमने जो रूम बुक किया है 110 है। इसके बारे में हम आपको बताएंगे, पर ये सारे रूम्स हैं। होपफुली आपको ये अच्छा लगेगा। प्राइस हमने लगभग 2800 पे किया इंक्लूडिंग GST। अच्छा था। वी गॉट रूम नंबर 110। इट्स 4 बेड room. So the price we paid, I will just first tell about the price, 2,800 rupees including everything, GST and all. As you enter, the door is there with manual key. 2 full king size beds, as you can see. 2 full king size bed, literally full. Okay. Then there is a cupboard here. Cupboard is there. There is no electronic safe. Okay. Dressing table and a chair. Then there is also air conditioner. Okay. Couple of chairs with tea table, right? And then a 2-seater sofa, right? So if I go back to the door and show you the size, it's big room. It's not small room, it's a big room. Okay. It's on the ground floor. Okay. Now if I come to the washroom area, washroom is humongous. It's like 1 bedroom. There's a geyser. I'm standing at the corner. I'll move to the other corner. As you can see, it's a humongous washroom. Okay. We have wash basin, a mirror, exhaust fan, western toilet, shower area, geyser, towel racks. And I can tell you that this room is approximately, I would say 9/10 or 9/11 square feet. Okay. There's also a TV here.
Of course, there are areas of improvement. As you can see, this bed. The bed has a bed sheet which is a colored one, and it looks very old. Then they have provided this blanket. I don't know how this blanket will be effective. We will come to know only tonight. It's December month, Varanasi. It's going to be cold. Let's see how it goes. There are so many small patches all over the walls. They're not dirty, it's just that they have not been painted for long, right? So, and then you can see this doormat. It's a government one. I am not expecting very hi-fi maintenance here, but at the same time I would say the price we paid 2,800. In this price we were not getting good hotels in Varanasi, near to the tourist area, and this one was near to our so we now got a towel delivered by our staff from the hotel. They also arranged auto for us that will take us to Ganga Aarti and to and fro from Sarnath. 600 rupees they will charge. They will pick us up from here, wait for us, and bring us back at 7:30, around 8 p.m. somewhere. 600 rupees. And I thought that's a better deal rather than taking our own car. Okay. So that's the hotel room. I will also give you a glimpse of the whole hotel. Okay. There are not many facilities here. Parking is there. I'll show you around the hotel soon.